अब दोनों साउंड बार को मैं अपने प्रोजेक्टर के साथ कनेक्ट करूंगा और यहाँ पर हम 5 टीवी स्टिक के जरिए ऑप्टिकल केबल कनेक्ट करके ऑप्टिकल केबल के थ्रू मैं आपको डॉल्बी डिजिटल साउंड का जो एक्सपीरियंस सुनाने वाला हूँ। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Is so beautiful when the sun is low. Rolling over the sands, you can see spice in the air. The outsiders ravage our lands in front of our eyes. My planet Arrakis is so beautiful when the sun is low. Rolling over the sands, you can see spice in the air. Outsiders ravage our lands in front of our eyes. तो गाइज ये था Zebronics 9500ws Pro वर्सेस Sony ht-s20r साउंड बार का साउंड टेस्ट। Zebronics 9500ws Pro साउंड बार का अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो देखना है तो लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक कीजिए, और इस साउंड बार का Sony ht-s20r साउंड बार के साथ कंपैरिजन वीडियो देखना है तो राइट साइड वाले वीडियो पे क्लिक कीजिए। आज का वीडियो बस इतने ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।